Friends, in our previous class, we were discussing the administration of the districts और हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे झारखंड में जब when it was constituted, initially there were 18 districts in 2000. Subsequently, on the 4th of April 2001, the 19th district was constituted in the form of Latehar, and the 20th district was constituted in the form of Jamtara on April 26, 2001. On 30th April 2001, two more districts were constituted, that is Simdega and Saraikela Kharswan. So that made it 22. And finally, in September 2007, we find that two more districts were constituted, that is the districts of Khuti and Ramgarh. Up when we discuss the administrative aspects of the district, administration we find that the district is managed by an IS officer of the rank of Deputy Secretary. This head of the district operates in three capacities. In the first capacity, he functions as the Deputy Commissioner. As Deputy Commissioner, he is in charge of the developmental projects in the district. Then in the second capacity, as district magistrate, he is responsible for the law and order aspects of the district. और तीसरा कैपेसिटी जिसमें कि वो फंक्शन करता है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. In his capacity as the district collector, the head of the district functions as the revenue head of the district.
राजस्व का इंचार्ज होता है जिले का। ही फंक्शंस एज द रेवेन्यू हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कभी कभी जो रेवेन्यू की फाइल्स होती हैं उसमें अगर मान लीजिए, देखिए भाई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डरली है या फॉर दैट मैटर स्टेनो बाबू, जिला में विभिन्न अधीनस्थ अधिकारी होते हैं और कार्मिक होते हैं, तो रेवेन्यू फाइल पे जैसे मान लीजिए उसने सील मार दिया डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का, वो फाइल अमान्य हो जाती है। जो भी रेवेन्यू फाइल है उसमें जो सील होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड। Subsequently, we come down to the third administrative unit, that is the subdivisional administration. Subdivisional administration this a subdivision consists of two or more blocks, sometimes only one block, and this is the administration, rather the administrative tier between the block and the district level. When Jharkhand was constituted, there were 33 subdivisions. When Jharkhand was constituted, आज के दिन, as in 2024, there are 45 subdivisions. तो कहने का मतलब ये है कि राज्य सृजित होने के बाद, after the state was constituted, we have added 12 more subdivisions to Jharkhand. The subdivision is headed by a subdivisional officer. Rather, he functions in two capacities. It is headed by a junior IAS officer or a senior PCS officer. ठीक है। अब ये अधिकारी फिर दो कैपेसिटीज में एग्जिस्ट करता है। As the revenue and developmental head of the subdivision, he functions as subdivisional officer. Revenue and developmental head of the subdivision. And as the law and order head of the subdivision, he functions in his capacity as subdivisional magistrate. Magistrate.
law and order head of the subdivision. दोस्तों चौथा जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है स्टेट में, दैट इज द ब्लॉक। ठीक है ना, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में स्टेट में चौथा है। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जब झारखंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो लगभग 200 ब्लॉक्स थे। आज के दिन झारखंड में देर आर 264 ब्लॉक्स इन झारखंड। सॉरी, 263 ब्लॉक्स, वेरी सॉरी, इन झारखंड। नाउ friends, a couple of years ago, say 4 years back, झारखंड में 264 ब्लॉक थे। ठीक है, लेकिन 2019-20 में जो झरिया ब्लॉक था धनबाद का, उसको धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ ब्लॉक को अपग्रेड करके इंक्लूड कर लिया गया धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन। नतीजन आज के दिन 263 ब्लॉक थे हैं। ठीक है ना। इन 2019 देयर वर 264 ब्लॉक्स इन झारखंड। तो इसके बाद क्या हुआ, द झरिया ब्लॉक of Jharkhand was upgraded and included in the Dhanbad was upgraded and included in the Dhanbad Municipal Corporation. नतीजा क्या हुआ कि आज के दिन 263 ही ब्लॉक्स रह गए हैं। अब इन 263 ब्लॉक्स का हम आगे इसका दृष्टिलोकन करेंगे। द ब्लॉक इज हेडेड बाय एन ऑफिसर known as a block development officer who functions in two capacities. तो head of the block is an IS officer on probation। जो शुरुआती दौर में IS ऑफिसर्स आते हैं प्रोबेशन, उनको बनाया जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 5-6 महीने के लिए वो सब सीखते हैं,
ब्लॉक के प्रशासनिक बारीकियों को, इसके बाद फिर वो एसडीओ हो जाते हैं। ठीक है, एन आईएएस ऑफिसर ऑन प्रोबेशन और अ पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, अब ये ऑफिसर ब्लॉक लेवल पे, द नोडल ऑफिसर ऑफ द ब्लॉक, ही फंक्शंस इन टू कैपेसिटीज। पहला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑफिसर बीडीओ। इसके दो अंश होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं, रेवेन्यू हेड ऑफ द ब्लॉक और दूसरा होता है डेवलपमेंटल हेड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, और जो दूसरा इसका कैपेसिटी होता है जिसमें यह फंक्शन करता है, वो है ब्लॉक डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर हेड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटीज में फंक्शन करता है। तो ब्लॉक लेवल पे देखिए, मैंने पहले ही बताया कि झारखंड जब कॉन्स्टिट्यूट सॉरी टिल 2019 देयर वर 264 ब्लॉक्स, और इसके बाद जो है झरिया ब्लॉक को जो है इंक्लूड कर लिया गया धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो जो है अब 263 ही ब्लॉक्स रह गए हैं आज के दिन। ब्लॉक को हेड करने वाला, देखिए शुरुआती दौर में जो आईएएस ऑफिसर होता है प्रोबेशन पे आता है, वो 5-6 महीने तक के लिए उसको ब्लॉक का हेड बना दिया जाता है ताकि वो चीजों को समझे, बट दैट्स बेसिकली अ प्रोबेशनरी फेज। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, या फिर कोई पीसीएस ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल सर्विसेज से सेलेक्ट होता है, उसको बनाया जाता है ब्लॉक का हेड। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, as the head of the block, the officer functions in two capacities. एक तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, जिसमें कि वो रेवेन्यू हेड होता है ब्लॉक का, राजस्व का हेड होता है, और डेवलपमेंटल हेड ऑफ द ब्लॉक। And the next capacity is deputy collector. In his capacity as deputy collector, oh sorry, law and order head of the block. ठीक है, clear? Now, when we discuss block administrations, तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ द 263 ब्लॉक्स इन झारखंड, 263 ब्लॉक्स में 132 blocks are notified. And 131 blocks are non-notified. Now, concept of notified administrative
एरियाज क्या है? कोई भी एरिया को क्यों नोटिफाई किया जाता है? हाँ? तो कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिफाइड एरियाज के अधीन पहली चीज तो ये होती है कि द scope of development of a notified area is very large. मतलब वहां प्रगति की संभावना बहुत ज्यादा है, नए उद्योग बसाए जा सकते हैं, नए संसाधन वहां पर हैं, तो द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी लार्ज. ठीक है. अब पहली चीज ये हो गई. इसके साथ ही साथ क्या है? द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द एरिया इज इनएडिक्वेट. जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पर्याप्त नहीं है. द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द एरिया इनएडिक्वेट. तीसरी चीज जो है, द गवर्नमेंट क्रिएट्स एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया. ठीक है. Additional infrastructures for the rapid development of the area. The notified areas, चौथा चीज ये है कि the notified areas are administered and managed by government appointed officials and not by popular representatives. ठीक है ना, elected representatives. Administered not by specially appointed government officials and not by elected representatives. ठीक है. एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये नोटिफाइड एरियाज का कॉन्सेप्ट है. वो एरिया जिसमें कि बहुत सघन
ये कह लीजिए कि विकास की आवश्यकता होती है. इंटेंसिव डेवलपमेंट हैज टू बी ब्रॉट अबाउट, दैट इज नोटिफाइड एज अ नोटिफाइड एरिया. ठीक है. तो आउट ऑफ द 263 ब्लॉक्स इन झारखंड, 132 which are in dire need of a proper administrative machinery, उसको नोटिफाई किया गया है. ठीक है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिफाइड ब्लॉक्स. ये समझ में आ गया कि नोटिफाइड एरियाज और नोटिफाइड ब्लॉक्स क्या हैं. नाउ वी गो फर्दर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन झारखंड. ठीक है. rather democracy at the grassroots level in Jharkhand. Democracy at the grassroots level या पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड. फ्रेंड्स, भारत में यूं तो कह लीजिए कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी और फॉर दैट मैटर पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस, they range since the Vedic times, from the republics of the Mallas, the Lichavis, in ancient times, to the local body administration of the Cholas, as is apparent in the Uttar Merur inscription of the Chola dynasty. But in modern times, democracy, rather participative democracy or democracy at the grassroots levels, can be traced to the Ajmer experiments in modern India post-independence India. Popular representation or participative democracy can be traced to, सबसे पहले क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एल्बर्ट मेयर, he conducted his so-called experiments in Ajmer district adjacent to Delhi, in community development and panchayati institutions. So the Ajmer experiments of the American sociologist Albert Mayer. इनके एक्सपेरिमेंट से
the Community Development Scheme CDS scheme was launched, जो कि कोशिश किया कि कैसे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल से प्रॉपर ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट। तो यहाँ के बाद द फाइंडिंग्स ऑफ led to the starting of the Community Development Scheme CDS। ठीक है, इसके बाद द बलवंत रे मेहता कमेटी was appointed in 1957। Based on the recommendation of the Balwant Ray Mehta Committee, the first Panchayat Raj bodies were set up on October 2 in the Nagaur district of Rajasthan and the second on November 1 in the Anantapur district of Andhra Pradesh। ठीक है, committee, the first Panchayat bodies were set up on October 1959 in the Nagaur district of Rajasthan and the second Gram Panchayat was set up in on November 1, 1959 in the Anantapur district
आंध्र प्रदेश। ठीक है। सब्सिक्वेंटली the Ashok Mehta Committee appointed in 1977 recommended a uniform three-tier Panchayati Raj system all over India. ठीक है। Now, friends, इसके बाद a few more committees were constituted, like the Lakshmi Mal Singhvi Committee and then the Sarkaria Commission. ठीक है ना। और फलस्वरूप शुरू तो राजीव गांधी की सरकार ने ही किया था, लेकिन the act could not be passed in parliament before the Rajiv Gandhi government fell in 1989. And two small interregnums in the form of the government of VP Singh and Chandrasekhar followed. They did nothing very important. And when the Narasimha Rao government was elected to power in 1992, rather 91-92, the government passed the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, providing for rural Panchayati Raj bodies and urban Panchayati Raj bodies. ठीक है। तो subsequently the Lakshmi Mal Singhvi Committee the Sarkaria Commission the P.A. Sangma Committee recommended several improvements and the Narasimha Rao government Narasimha Rao enacted
enacted the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Constitutional Amendment Act. The 73rd Constitutional Amendment Act enacted in 1992-93 added the 11th schedule in the Constitution providing for rural local bodies, panchayati bodies, or the 74th Constitutional Amendment Act enacted in 1992-93 added the 12th schedule in the Constitution providing for urban local bodies, municipal bodies, ठीक है। तो ये दोनों प्रोवाइड करते हैं कि अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब जो है असली समस्या ये आई कि 24 में से लगभग 15 जिले ऐसे हैं झारखंड में जो कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत हैं। शेड्यूल 5 का मतलब ये है कि ये बहुत जनजातीय जनसंख्या इनमें काफी है और इनका प्रशासन एक विशेष तौर पे अनुसूची 5 के अधीन किया जाता है। और जब ये पंचायती राज एक्ट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ तो ये था कि शेड्यूल 5 में इनका क्या प्रभाव होगा, शेड्यूल 5 के एरियाज में
it was not very clarified. So consequently, in 1996, the government of India enacted the Panchayati Raj Extension to Scheduled Areas Act, whereby which the provisions of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts were extended to the tribal areas in the 5th schedule. ठीक है ना? तो in 1996 was enacted the Panchayati Raj extension to scheduled areas PESA Act, which provided that the provisions of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts could be applied to the tribal areas in the 5th schedule. ठीक है? Now, तो consequently, as things stand today, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक्सटेंशन झारखंड में हो चुका है. तो अब आइए देखा जाए क्या सिचुएशन है पॉपुलर बॉडीज का झारखंड में. रूरल लोकल बॉडीज पंचायती राज इन झारखंड. देखिए झारखंड में at the district level there are 24 जिला परिषद. Having 545 members. ठीक है? There are 4345 ग्राम पंचायत.
out of them 2071 gram panchayats are notified. ठीक है, these many gram panchayats are notified. Now there are 32,620 villages in Jharkhand. The gram panchayat, जैसा कि आप जानते हैं, it is headed by a मुखिया. ठीक है, and then we come to अर्बन लोकल बॉडीज इन झारखंड, उनकी स्थिति क्या है. ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल बॉडीज, in Jharkhand. Friends, at the lowest unit, the simplest unit of urban local administration is the Nagar Panchayat or municipal panchayat as we call it. Nagar Panchayat. Nagar Panchayat is constituted in those urban agglomerates where the population ranges from 30,000 to 1 lakh. Huh? और आज के दिन झारखंड में 20 नगर पंचायत हैं. Then we have nagar parishads. Municipal councils. For those urban conglomerates where the population ranges from 1 lakh to 5 lakhs. ठीक है, और झारखंड में देर आर 21 नगर परिषद.
ठीक है. Then the third, ये नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, they are for urban agglomerates having a population above 5 lakhs. तो 5 लाख के ऊपर के जो शहरी आबादी वाले शहर हैं उन पे आप कॉरपोरेशंस होते हैं. और आज के दिन झारखंड हैज 9 कॉरपोरेशंस. ठीक है. ये 9 कॉरपोरेशंस कौन है भाई? मेदिनीनगर इन पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, चास, ये बोकारो के का सैटेलाइट टाउन है, मानगो, आदित्यपुर, ये मानगो और आदित्यपुर दोनों जमशेदपुर के सैटेलाइट टाउन्स हैं. एंड देन वी हैव धनबाद एंड देवघर. तो 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आर देयर इन झारखंड. तो सब मिला के देखिए कितने बॉडीज हुए? 12 नगर पंचायत, 20 नगर पंचायत, 21 नगर परिषद, 9 नगर निगम्स या कॉरपोरेशंस. तो दैट मेक्स इट 50. And then the 51st urban local body is the Jamshedpur Notified Area Committee. ठीक है. The 51st urban local body is the Jamshedpur area, notified area committee. तो 51 अर्बन लोकल बॉडीज हैं. इसके अलावा देयर इज अ कंटोनमेंट बोर्ड इन रामगढ़ ऑफ द सिख रेजिमेंटल सेंटर. ठीक है ना. अ कंटोनमेंट बोर्ड has of the Sikh Regimental Center has been
constituted in Ramgarh. फ्रेंड्स, यहाँ बताना मैं आपको उचित समझूंगा कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट, the Ministry of Housing and Urban Development of the central government has taken a stand that all the 62 cantonment boards of the country will be abolished by 2025. However, of the center, has decided to abolish all (62) cantonment boards of the country by 2025. ठीक है? तो दोस्तों, यहां तक हमने जो फिर मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं इसके बारीकी में नहीं गया हूं अभी। द निटी ग्रिटी ऑफ इट हैज टू बी डिस्कस्ड विथ यू, क्योंकि देखिए ये एक नोट एपेक्स लेवल एग्जामिनेशन है, इसमें द डिटेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो आई हैव जस्ट आउटलाइंड a broad morphology of the rural and urban local bodies as well as the administrative divisions of Jharkhand. एक खाका मैंने खींच दिया है। अब in our next class we will be coming to the legislature and the executive aspect of it, और फिर और other introductory dimensions of our state. With this, I thank you for the class. Have a nice time. Good day. Thank you. Man,